Good morning and student. Now today we discuss class 10th chapter outcomes of democracy. In this video we discuss some important question. You know very well your second terms is subjective based according to CBSE. ठीक है, जैसा कि CBSE ने आप लोगों को बताया ही है कि सेकंड टर्म में भी आपका अगर कोरोना टाइम नहीं रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो ऐसे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बेस्ड है, जो कई बार ईयर्स में आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन एज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। और हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, एनालाइज। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि जो ये 2014 और 2015 दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। A democratic government is known as responsive and accountable government because of the below mentioned reason. First, in democracy, people have the right to choose their rulers and people have control over the rulers. ठीक है, डेमोक्रेसी में पीपल्स को राइट रहता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे, अपने रूलर को, और वो अपने रूलर्स को कंट्रोल कर सके उनकी पावर का मिसयूज करने से। Secondly, in democracy, citizens have the right and the means to examine the process of decision making, because यहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं। ऐसे में जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें सिटीजन बाय बिहाफ ऑफ सिटीजन करते हैं, तो इसे सिटीजन का राइट है। They have the right to participate in decision making with the affect them all, and democracy is responsive of the needs and the expectation of the citizen. For example, in democracy, each and every issue is first discussed in the parliament and then such a decision is taken which will promote common good. Your next question, explain the economic growth and development in a democratic setup. Economic development depends on countries' population size, global situation, cooperation from other countries, and economic priorities adopted by the country. And the important points in context the economic growth and development are follow. Firstly, studies have shown that rate of economic development for democratic countries is not particularly high, and between 1950 and 2000 the dictatorship had slightly higher rate of economic growth. Even today, the differences in the rates of economic development in democracies and dictatorship are negligible. Third, economic inequalities are also found in a democracy. Like आप देखते हैं, like इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे जो पुअर और रिच के बीच का डिफरेंसेस है वो ज्यादा मिलता है। हम इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम नहीं कर पाए, है ना। और वही अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें, साउथ अरेबिया वगैरह, वहां पे अगर हमें देखने को मिलता है वहां का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई है। Your next question, democracy accommodates social diversity. Support the statement with example. Democracy develop a procedure to conduct their competition which reduce the possibility of social tension to become violent. Democracy develop a procedure to conduct their competition which reduce the possibility of social tension to become violent, and democracy regime have the ability to handle social differences, divisions, and conflict. And democracy can never resolve conflict among differences group, but it can ask people to respect the differences and can involve a mechanism to negotiate these differences. For example, Belgium has successfully negotiated differences among the ethnic population, which reduces the possibility of tension. देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर रीड करा था बेल्जियम में, श्रीलंका में किस तरह से वहां की जो प्रॉब्लम्स थी उसको किस तरह से बातचीत करके किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया, और एक सक्सेसफुल, एक एग्जाम्पल, एक आइडल बन गया वो वर्ल्ड के आगे। Describe the favorable condition generally provided to people under a democratic rule. The favorable conditions generally provided to people under democratic rule, it promotes dignity to every individual irrespective of their caste, creed, or religion. It ensures freedom of the individual. It provides equal status and opportunity to all, and it provides positive reservation for women and other advantage of discriminated groups. Now, thank you, student. In next video, we discuss other question. Thank you. Jai Hind.